Today we are going to solve a word problem or a numerical from 9th physics. The statement is given as a train starting from rest accelerates uniformly and attains a velocity 48 km per hour in 2 minutes. It travels at this speed for 5 minutes. Finally, it moves with uniform retardation and is stopped after 3 minutes. Find the total distance traveled by the train. Let's solve this. First of all, look at the figure. The train is moving from rest. It means it's starting its velocity is 0. Then it moves and reach a velocity of 48 km per hour. एक ट्रेन जो है वो एक स्टेशन पर खड़ी है और वहाँ से वो चलती है और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलते हुए 48 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार पर पहुँच जाती है। और इस सारे प्रोसेस में टाइम जो है वो लगता है जनाब 2 मिनट का। It travels at this speed. It travels at this velocity 48 किलोमीटर पर आवर for 5 minutes. 5 मिनट तक वो इसी स्पीड पर चलती रहती है, यानी कि 5 minutes. एंड ये इसी स्पीड पर चलते हुए ये फासला तय करती है और इसका टाइम t2 = 5 minutes। और उसके बाद उसको ब्रेक लगाई जाती है और जब ब्रेक लगाई जाती है यहाँ तक इसकी वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आ रही रहती है। ब्रेक लगाने के बाद वो 3 मिनट के बाद स्टेशन पर जाकर रुक जाते हैं और यहाँ उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। This figure shows that the motion of train has 3 steps. So इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर वेलोसिटी इसकी 0 है और इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है और अब इसका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है बल्कि माइनस है। तो हमें कैलकुलेट करना है इस टाइम में इसने कितना फासला किया। सेट s1, सेट s2, सेट s3. We divide this total motion into 3 parts, s1, s2 and s3. Let's calculate. Here vi is equal to 0, vf is equal to 48 kilometer per hour, t is equal to t1 is equal to 2 minutes, which is equal to 2 into 60, which is equal to 120 seconds. Now in the second case we see v, here v is constant or v average is equal to 48 kilometer per hour and time t2 is equal to 5 minutes, which is equal to 5 into 60 second, which is equal to 300 seconds. Now in the third case, here it is moving with the negative acceleration and its velocity is decreasing by the time. So here initial velocity vi
is equal to 48 kilometer per hour. Time t3 is equal to 3 minutes, which is equal to 3 into 60 second, which is equal to 180 second. We have to find here S1. Here we need to find S2, and here we need to find S3. Then we add all these distances traveled by the train, and we got the total distance traveled by the train, which we have to ask. Now it is moving with a constant acceleration, so its average velocity is equal to Vf plus Vi over 2. First of all, we need to convert this 48 km per hour into meter per second. Then we calculate the answer. I calculate it here in a separate sheet. Now we need to calculate 48 km per hour. 48 km per hour is equal to 48 into 1000 over 3600 meter per second, which is equal to 0.000. 2 1 the 2, 2 8 the 16, 2 2 the 4, 2 4 the 8, 2 9 the 18, 2 12 the 24, 3 3 the 9, 3 4 the 12, which is equal to 40 over 3, which is equal to, and we divide it with the calculator. 40 divided by 3 is equal to 13.33 meter per second. I calculate it here, so over Vf here is equal, this is equal to 13.333 meter per second. Now Vf 13.333 plus 0 over 2 is equal to 13.333 over 2 is equal to, divided by 2, 6.667 meter per second. Now S1 is equal to V average into T1, which is equal to 6.667 into 120 into 120. This is equal to 800 meter. Now look at this. We use this figure again here. So S2 is equal to V into T, which is equal to 13.333 into 300. We calculate this.
13.333 into 300, which is equal to 99.9 meter. Now we see at this is the initial velocity and this is the final velocity. Vf plus Vi over 2 is equal to V average. V average is equal to Vf is 0 and Vi is 13.333 over 2, which is equal to 6.667 meter per second, and S3 is equal to V average into T3, which is equal to 6.667 into 180, .667 into 180 is equal to जैसा कि आपने देखा, मैंने इस मोशन को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया और इसका अलग से S1 फाइंड कर लिया. S1 इज इक्वल टू 800 मीटर. इसी तरह S2 फाइंड कर लिया तकरीबन 4000 मीटर. इसी तरह S3 फाइंड कर लिया 1200 मीटर. तो अब हमें चाहिए ट्रेन का टोटल उसने कितना फासला तय किया और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन. तो उसका टोटल डिस्टेंस S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3. S1 800 प्लस S2 4000 प्लस S3 1200 और ये सारे के सारे चूँकि मीटर हैं तो मीटर. तो ये आ गए हमारे पास 6000 मीटर. यानी कि ट्रेन ने यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक रुकने तक इसने 6000 मीटर का फासला तय किया है. Thank you for watching. Please share my channel, subscribe my channel, and if you have any problem, अगर आपने कोई हाथ सवाल समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. Thank you for watching.